a regular program called Niranta Shiksha. And capacity building division of NHA holds virtual training regularly. And we at NHA finds that virtual training is an important, powerful tool that allows education and professional development of transcend geographical barriers, making learning accessible to a country's audience, and which is our agenda. So, as we all know, that National Health Authority is an apex body responsible for implementing India's flagship public health insurance assurance scheme called Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, and has been trusted with the role of designing the strategy, building technology infrastructure, and implementation of National Digital Health Mission to create a national digital health ecosystem. And NHA leads the implementation of Ayushman Bharat Digital Mission, collaborating with various ministries, state governments, and private sectors and civil society organizations. So we collaborate with everybody to get along, and we are implementing this Ayushman Bharat Digital Mission in that way. It also oversees the nationwide implementation of PMJY, which is it's a strength of our ministry and NHA, and by state agency established by individual states as society manage the scheme at the state level. SHA operates to extend coverage under PMJY, including the beneficiaries beyond those identified by social economic caste census. We are holding this PMJY and ABDM virtual training programs aimed at enhancing the understanding and implementation of Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and Ayushman Bharat Digital Mission. Online training are targeted for healthcare professionals, administrators, and other stakeholders involved in this scheme. The session covers essential aspects of PMJY health insurance, benefits of BPLs, ABDM digital health ecosystem, and integration of technologies like Ayushman Bharat digital account and health information exchange as well. Participants are also trained on registering beneficiaries using digital platform for healthcare access, managing telemedicine consultation, and ensuring smooth service delivery. The virtual programs of NHA also educate stakeholders on new policy guidelines, eligibility criteria, and best practices for implementing the schemes, which where we see the impact analysis of these programs. So we are regularly doing this impact analysis, which are very important. That while our schemes are getting percolated to the peripheries, it's important that these schemes are also seen as what are their impact analysis. These trainings are aims to empower individual to efficient use of technology, which is very important. And you can find that ABDM is finding it very helpful. Healthcare delivery ensures seamless coordination across different health departments and improve access to quality health services. It is available through government portals, often include webinars, self-paced learning modules, and interactive sessions. So, Niranta Shiksha, as it is a part of our virtual training calendar and it's held every month, this aims to improvise learning from you all, because we have people from peripheries. We all understand that peripheries people need regular trainings, and we cannot have basically in-house trainings. Is difficult for us, but these are the platforms where we are trying to educate people at the peripheries, and it's a crucial role in health education by promoting lifelong learning. The participants usually are health experts and officials from SHA, different hospitals, stakeholders from different walks of life. And this webinars create a platform to create professional to discuss the cause and prevention of disease. Our aim is to have a prevention program, and that's very important, because if we talk about prevention, we will be able to reduce down our out of health expenditures, out of pocket expenditures as well. So it is a informed choices to an individual, simultaneously empowering individuals to avail themselves of benefits under PMJY. Super specialists from concerned fields talk about their different health issues. This time we have taken topic childhood cancer. We also have packages for the same, and which will be very well deliberated by our very dynamic director, Mr. Dr. Pankaj Arora. He has already joined with us, and he is already the head of HPQA at NHA. So I will request Dr. Pankaj Arora ji to kindly deliberate on HPQA and our health packages, which are very important and the strength of PMJY. Thank you so much.
Sir, Pankaj sir, over to you, sir. Thank you very much. Thank you, Nita ji, for arranging this Shriman Shiksha Abhiyan, and it has been an amazing initiative. Regular training of the people is really, really important, and it really gives the people kind of the experience which they need for performing their duties. So let's start with what we are talking about today. So a very good afternoon to everyone, and it's a real privilege for me here to speak on the National Cancer Awareness Day, which was yesterday, and addressing the topic that really profoundly impacts so many lives, especially the childhood cancer, as we're discussing. I would like to take this opportunity to reflect on the importance of this day to raise awareness about childhood cancer and highlight also about the health benefit packages which we provide in the APPMJ, the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya scheme, with a particular focus on supporting the child cancer care. Uh, this day was established in 2014 and serves as a reminder for us that early diagnosis is really vital to save lives and kind of reducing the overall cancer burden in India. Being a very growing health challenge which is affecting millions every year, through awareness campaigns like today, we uh, dispel this myth, reduce the stigma, and promote timely medical intervention, empowering individuals and communities to take charge of their health. Child cancer now is turning to our focus for this session, and through cancer, although the cancer is really is not that common in children than in adults, but it is has a profound impact, as told earlier. Each year in India, nearly 50,000 people, children, are diagnosed with cancer, and in the high income settings, like the countries which are having is up to 70 to 90% of cure, but unfortunately, sometimes in countries which are not developed, and there's a survival rate is lower due to late diagnosis, limited access to treatment, and high cost of care. This underscores the importance of the public awareness and strong healthcare systems to bridge this gap and improve outcome for our young patients. Coming on to our scheme, which is a real pathbreaker, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. It's the largest government-funded health insurance scheme, which provides the coverage, as told, of 5 lakhs per family per year for the secondary and tertiary care and hospitalization to nearly 12 crore families and nearly 60 crore beneficiaries, which is nearly 50% of the Indian population. And this benefit, which is a 5 lakh benefit, comes as a family floater for adults and children in the family, which means that it can be used by one or all of the family members, and there's no cap on the family size as well as the age of the member, and there's also no cap on the previous diseases which are there for the family. Like if somebody is having a diabetes or any cancer earlier, but once it's included, it will be treated as on the same day. Its inclusion is on the same day, and it doesn't affect their eligibility to get treatment. Health benefit packages, as India, as our system is, Ayushman Bharat is based on the case-based packaging. So it's not like fee for service or line item budgeting. It's a case-based system in which we get the treatment at a specific rate, and it being providing services to more than 50% of the Indian population, we get that collective bargaining power, and we can make the package rates inclusive of the packages began with launch of 1.0, which included packages rather than procedure, which are 1394 in the start of the scheme, which was in September 2018. Since then, we have done multiple revision, actually 5 of them, and release of their 2.0, 2.1, 2, and finally the last one, which we have done 2022, which includes now 1961 procedures, including the recent inclusion of thalassemia packages, has been done with wide range of specialty being covered, nearly 27. Health benefit package initially
included only few specialties, which and did not include the palliative and other cares, but it was further enhanced to include those palliative cares and some bone marrow transfusion, which was autologous, and specifically for children's and pediatric cancers, we have chemotherapy for ALL, that is acute lymphoblastic leukemia, and CNS lymphomas, medulloblastomas, Wilms tumor, retinoblastoma, etc., Ewing's tumor. And these packages not only include the chemotherapy, it include all diagnostics, pre-hospitalization, accommodation, food, and follow-up care across various specialties, up to 15 days after hospitalization also. For specific diseases such as cancer, we have used the expertise of the National Cancer Grid, Tata Memorial Hospital. They were consulted to provide inputs, and we have our own medical cell where experts excellence like AIMS, PGMR, etc. are there, and the public and private sector provide input. NHA has also established a technical review committee for costing, and wherein costing experts review the available evidence and finalize the health benefit packages as per the CHSI study done by PJMR earlier. The latest version is really good and has been taken up by several states, which is the 2022, and is giving services to and the children's too. And NHA is also ensuring that our little souls are not who are really marginalized in the society, section of society are there, and should not be deprived of getting adequate medical attention. In this regard, NHA is in the collaboration, not in collaboration, rather as a part of Ministry of Health, has provided its ecosystem to provide cashless treatment for poor cancer patients through the umbrella scheme of Rashtriya Arogya Nidhi, the RAN scheme, which is three component: the Rashtriya Arogya Nidhi, the Health Minister Cancer Patient Fund, as well as the scheme for financial assistance for patients for specific rare diseases. So, in this, the Health Minister Cancer Patient Fund provides financial assistance to poor patients living below the threshold in the poverty line and suffering from cancer for their treatment at regional cancer center, the RCCs and the tertiary care centers and state cancer institutes. So they're public sector entities, and patient are provided financial assistance for treatment at government hospitals having super specialty facilities. Those having treatment in private hospital will not be eligible for function under the scheme actually, but these government hospitals are really good, and they are providing excellent care to these patients. The financial assistance is these patients is nearly one-time grant of rupees. And together with these schemes, we try to make that extra edge to treat these childrens and give them the care which we can, and kind of put one of what we say can put our foot forward. And I'll request all of the people who are joined to put their foot forward to kind of help these children and arrange for and devise such policies which can lead to the treatment of these children's. Never hesitate to lead those hospitals, spread awareness, take lectures in the colleges, take lectures in the society, and promote these through IC activities in whichever way possible. NHA is doing through Niranta Shiksha, and you can do through your own side, and be a part and a stepping stone in building an amazing building block for these children in the time to come. And I hope we celebrate this National Cancer Awareness Day every year. Today we are late by a day, but yes, it's an amazing kind of way to reach people and tell them that how cancer matters, and how we can cure it if it's diagnosed early and treated early. Thank you very much. Thank you so Over to much. you. Thank you so much. Thank you so much about the entire HPQA and the cancer details for RAN and other things, which was very important people to know about it, that how they can access the services from the government facilities as well as in the private, where at NHA, where we can take up this things in the empaneled hospitals of NHA as well. So now we have for the sessions, we start with the sessions now. Thank you so much about Dr. Pankaj Arora ji for the same. And now we have session about the childhood cancer, which has been going to be taken by Dr. Nita Radha Krishnan, who is the Associate Professor at HOD Department of Paediatrics, Oncology in Postgraduate Institute of Child Health, Noida.
And Nita has been working in this field for last, I think, 25 years, and been working with different government and as well as the private institutes also. So she has been very kind and taking care of the children. For even when I go to her hospital and see visit, I'm fortunate that I visited her hospital, and it was like that every child is happy. You can see child's face, and they learn from her that how they can make the life can be strengthened, they can have a fruitful life in future as well. And I have some seen because they have a good facility of BMT also now. So the best part is now at least there are around I think Anita will correct me about that, 18 to 20 children have already have bone marrow transplants over there. And this was a nice, I mean, privilege to see all those things. And we feel, I mean, we at government also feel privileged that such students are doing such a good work, and we have good people over there. Nita has been very instrumental in developing basically the guidelines and policies for the government of India along with me, because we have been working for very long. But this time, this was a good initiative which I have seen in our hospital, and I wish that you all should come and see whenever you have time. It can be a visit that will be very helpful for you to learn also and how to come up and complement the services. Over to you, Nita. Thank you, madam. Good morning, everybody. And I would like to congratulate National Health Authority for this initiative of Nirantar Shiksha. And it is always very useful to brush up our skills and knowledge about topics which we are not used to. And I really thank from the bottom of my heart for that you have taken up childhood cancer as a topic this year, because it's something which is often neglected. And it's like Dr. Arora just mentioned that it is not a very common cancer. So because of that, all children, just about 1% of all cancers are childhood cancers. So many a times in the policy making, it comes a little lower down. And we're really thankful to the National Health Authority for taking this topic. I thank Dr. Arora for setting the stage for this topic. And I'm going to share my slides now. I'll keep my video off because I've joined in from Nagpur today, and my signal is not very good. I hope you can see my slides. So, Institute in Noida, which is situated, can you hear me? Is the audio clear? Yeah, Nita, you can continue. Is the audio, okay. So it's a government institute in Noida, which comes under the state government. It's a state government institute of Uttar Pradesh. And I'm also currently working with the International Pediatric Association as their working group chair on child cancer. I'm going to briefly discuss what childhood cancers are, how are they different from adult cancers, and a brief overview on how they are managed, and why is it that we need to pick them up early. Like Sir just mentioned, that early diagnosis is very, very crucial. And I'll end with a part on what are the barriers that we're facing in our country and how a universal healthcare system like National Health Authorities is helpful in getting treatment for these patients. 4 lakh children and adolescents. When I say children and adolescents, it's between 0 to 19 years, are estimated to develop cancer globally every year. Out of this, around 70,000 patients are supposed to be in our country. Cancer is a leading cause of death in children and adolescents. Likelihood of survival upon which the child lives. I think this is probably one of the very few disorders where you are born is important. If you are born in US or if you are born in Australia, even if you are from a poor socioeconomic status, still you have access to a health insurance package which covers your treatment completely, even despite you are poor. Whereas if you are born in a country, a low and middle income country, where you do not have such a package, then your survival really is affected by that. So likelihood of survival, again I'm repeating, it depends on pediatric cancers constitute only about 1% of the whole cancers in the world. And in US, it has been estimated that there are so many cancer survivors now that 1 in 500 adults between the age of 20 to 39 years is a cancer survivor. So that's such a big number that we're talking about. Why? Because majority of these children, although the cancer is rare,
majority of children survive the cancer. And because of that, cancer survivor numbers are also increasing. In data, the ICMR National Institute of Cancer Prevention and Research have said that there are 2.5 million people in India who are living with cancers, and about more than 7 lakh new cancers are being registered annually. In India, there is a National Cancer Registry Program, which is run again by ICMR, which has two parts, a population-based cancer registry and a hospital-based cancer registry. So our center is one of the hospital-based cancer registries with affiliated to ICMR, and we provide data of children diagnosed with cancers in our center to ICMR, and which data includes treatment data, outcome data also. Whereas PBCR or population-based cancer registries are registries which are looking basically at what is the geography of the patient, where is the patient coming from, which district is the patient coming from, should we do any activities in that area. So especially for adult cancers related to, say, hepatitis or related to cervical cancer, etc., you can do preventive activities, and that is the focus of population-based cancer registries. So this is the incidence of cancer in Indian states and union territories. This is data which has come out in 2016, and you can see how the incidence rate differs between the states. It could also be because of reporting, because certain with more than the other states. So it could be because of that as well, but this is the population-based data that has come in. Do we know how many cancers, how many children with cancers are there in India annually? We actually do not, because the data is very, very patchy. Only hospitals are reporting it. So if there are many patients who don't even reach a hospital, many patients who reach a hospital but do not get treated further. So because of all this, we do not really know how many numbers are there, but we are estimating around 50 to 70,000 patients annually. In certain disorders, like for example, if diseases like in certain malignancies like lymphomas, India and US would be reporting similarly. But in certain disorders like, for example, leukemia or CNS tumors, we have a huge gap in numbers of patients reported in US and in India, especially too for brain tumors. Because people, when they hear the name brain tumor, they get so scared and they don't report to a hospital at all. So it is not that the disease is not there. Geographically, the prevalence of the disease will be similar, whether it is India or US or Australia or UK. But in India, the diagnosis is less because people are scared. People don't get to a hospital. In a brain tumor, symptom will be vomiting. They get treated for something else instead of getting commonly. Another challenge we face commonly is gender. You know, in our country, boys still get preference above girls in the hospitals. So they are brought to hospitals more by families. And as a result, the gender bias in our country. So the projected incidence, I said, around 70,000 patients are expected to be there. But like I said, between the numbers expected and the numbers registered, there is a huge gap. Now, what is the difference between cancer in adult versus cancer in children? Cancers in adults, you would have heard the name कार्सिनोमा, कैंसर का लंग, तो ये सारों को सीए लिखते हैं, सीए ब्रेस्ट, सीए सर्विक्स, सीए फैरिंक्स, सीए प्रोस्टेट, ऐसे लिखते हैं. ये बच्चों के कैंसर में ज्यादातर कैंसर्स ब्लड कैंसर्स होते हैं या लिम्फ नोड से जो आते हैं लिम्फोमास होते हैं. सो मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स और कैंसर्स इन चिल्ड्रन आर ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, CNS ट्यूमर्स एंड देन द रेस्ट ऑफ द सॉलिड ट्यूमर्स. और बाकी सॉलिड ट्यूमर्स में भी कार्सिनोमास कम होती है, ब्लास्टोमा ज्यादा होते हैं, क्योंकि ग्रोइंग टिश्यू है. तो वो जो ग्रोइंग टिश्यू में जो कैंसर्स होती है उसकी तरीका अलग होती है, वो कार्सिनोमास नहीं होती है. दूसरा डिफरेंस क्या है, इसका कोई प्री मैलिग्नेंट स्टेटस नहीं है. आपने सुना होगा कि ओरल केयर देखते रहना है. कार्सिनोमा कैंसर माउथ देखने के लिए पीरियडिकली इफ यू चेक योर ओरल कैविटी, अगर छोटा भी प्री मैलिग्नेंट लीशन होता है तो पकड़ में आ सकती है. ये बिल्कुल नहीं है चाइल्डहुड कैंसर में. चाइल्डहुड कैंसर हम पहले से पता नहीं कर सकते. पहले मतलब शुरुआत में आप पकड़ सकते हो, बट मैलिग्नेंसी होने से 1 साल पहले आपको पता नहीं चलेगा कि कैंसर होने वाला है.
तो वो जो कार्सिनोमा इन सिटू या प्री मैलिग्नेंट स्टेटस एडल्ट कैंसर्स में बहुत वेल डिफाइंड है, इसलिए एडल्ट कैंसर्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वेरस पीडियाट्रिक कैंसर्स में प्रिवेंट का कोई ज्यादा रोल नहीं है। और एडल्ट कैंसर्स आपको भी पता है कि आपने सुना होगा कि एडल्ट कैंसर्स तंबाकू से हो रही है, या एडल्ट कैंसर्स अल्कोहल से होती है, सर्टेन वायरसेस से होती है। तो इस सब ये वायरस प्रिवेंट होती है तो आगे कैंसर भी प्रिवेंट हो जाएंगे। वेरस पीडियाट्रिक कैंसर ऐसे नहीं होता है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस कुछ नहीं है। जैसे माँ बाप आके हमसे पूछते हैं कि मेरे बच्चे को मैंने क्या किया जिस वजह से मेरे बच्चे को ये कैंसर हुआ, तो हमारा रिप्लाई वही होता है कि आपने कुछ, आपके परवरिश में कोई भी कमी नहीं हुई थी जिस वजह से कैंसर हुई, या एक्सपोजर में कोई कमी नहीं थी, या कोई ज्यादा गलत चीज का एक्सपोजर हुआ जिस वजह से कैंसर हुआ, ऐसे बिल्कुल नहीं था। तो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं है। अडल्ट कैंसर्स में हम लोग बता सकते हैं ना कि टोबैको आप अवॉइड करिए, तंबाकू गुटखा खाना बंद करिए, तो आपका मुंह के कैंसर्स, लंग कैंसर्स कम हो जाएंगे। वैसे बिल्कुल आपको कुछ भी आप पीडियाट्रिक कैंसर्स में प्रिवेंट नहीं कर सकते। और प्राइमरी ट्यूमर्स मैंने बताया, ब्लड और लिम्फेटिक टिश्यू का ट्यूमर ज्यादा होती है, उसके बाद ब्रेन होता है, और उसके बाद बाकी सॉलिड ट्यूमर्स होती है। और थर्ड बिगेस्ट डिफरेंस इज एडल्ट्स में ज्यादातर सॉलिड ट्यूमर्स, जिसमें आप एक जगह ट्यूमर शुरू होती है, आप पकड़ में आते हैं, फिर आपको उसकी स्टेजिंग देखना होता है। वेरस पीडियाट्रिक में क्योंकि ब्लड एंड लिम्फेटिक टिश्यूज ज्यादा कैंसर्स होती है, इस वजह से ये स्टेजिंग ही ज्यादा होता है। पहले शुरुआत में ही 80% स्प्रेड होके आते हैं हमारे साथ, और इस वजह से उनको जल्दी से जल्दी इलाज करके शुरू करना, इलाज शुरू करने में भी टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकते। So these are the childhood cancers. Again, to reiterate, leukemia, lymphoma, CNS tumors are the most common. After this, there are embryonal tumors, और embryonal tumors में neuroblast, kidney में है तो Wilms tumor, brain में medulloblastomas, rhabdomyosarcomas, retinoblastomas, etc. are there. अब बच्चों में भी between 0 to 14 years and between 15 to 19 years उसमें कैंसर का प्रेवलेंस में डिफरेंस है। तो छोटे बच्चों में अगेन एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमियास, ब्रेन एंड सीएनएस ट्यूमर्स कॉमन होती है, वेरस एडोलेसेंट एज ग्रुप में लिम्फोमा, थायराइड कार्सिनोमास, germ cell tumors etc. are more common. So there is a difference in the epidemiology of cancer. So this is probably the most common question that every parent asks a doctor who is treating cancer, कि what caused this cancer in my child. So कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन एक्सपोजर हो रही है, पर ये आयनाइजिंग रेडिएशन एक्सपोजर आजकल के जमाने में बहुत कम है। जैसे हम लोगों को पता है कि अल्ट्रासाउंड सेफ है, सीटी स्कैन अवॉइड करना है, डायग्नोस्टिक एक्सरेस अवॉइड करना है प्रेगनेंसी में, वो तो हम कर ही रहे हैं। बाकी जो एनवायरमेंटल एक्सपोजर टू रेडिएशन है वो तो है ही, बट उसमें भी हम ज्यादातर, हमें वो भी पता है कि ऐसे बहुत ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर जहाँ है वहां पे कैंसर होती है, बट ये सारा चीज हम प्रिवेंट बिल्कुल कर नहीं सकते। एनवायरमेंटल एक्सपोजर में भी ज्यादा कुछ नहीं है, बट मदर का एक्सपोजर टू स्मोक या फादर्स पेरेंटल स्मोकिंग इज रिलेटेड टू चाइल्ड्स कैंसर, सो दैट इज समथिंग वी कैन वर्क ऑन। एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव्स, फूड कलरिंग, पोल्यूशन, इन सब में जरूर रोल है, बट इसमें कुछ भी ऐसे नहीं है कि हम बोले कैंसर नहीं होंगे। And finally, a lot of genetic causes. So the younger the child, the higher the chance that there is a genetic cause. So we had a recent patient who was 40 days old. 40 days old के एज में उनको कैंसर हुआ है, तो डेफिनेटली उनको अंडरलाइन जेनेटिक कॉज होंगे, जिसकी वजह से बच्चा जब पेट में है तब से कैंसर शुरू हुई होगी, बट डेफिनेटली वो सारा इवेलुएट करना होगा ताकि वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में अवॉइड कर सकते हैं। बट ज्यादातर केसेस में भी ऐसे चीज नहीं है जो हम प्रिवेंट कर पाएंगे, इसलिए अर्ली डायग्नोसिस इज द क्लू. वी हैव टू पिक देम अप अर्ली सो दैट दे रीच अ सेंटर which can give treatment. And now with the availability of universal health care like Ayushman Bharat, we have access to treat, to get them to a center where treatment can be initiated so that their life is saved. So how can you detect cancer early? So this is from the warning signs which has been published by International Pediatric Oncology Society. So if you have having bruising, मतलब खून की कमी अगर आपको है तो बच्चा पीला पीला लग रहा है, बच्चा थका थका लग रहा है, तो उसमें आपको जांच करने की जरूरत है. If you have lumps or swelling in the body, अगर आपके शरीर में मान लीजिए गांठें आती है, गिल्टियां आती है, बहुत सारे बच्चों में गिल्टियां आती है और पेरेंट्स को भी लगता है और वहाँ के जो प्राइमरी हेल्थ केयर में जो डॉक्टर्स है उनको भी लगता है कि ये टीबी है, क्योंकि इंडिया में टीबी बहुत कॉमन है.
तो टीबी है सोच के टीबी का इलाज होती है, टीबी का जांच हुए बिना भी टीबी का इलाज हो जाती है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाती है। तो मैंने ऐसे पेशेंट्स मतलब एटलीस्ट इन अ ईयर 8 से 10 मरीज ऐसे होती है जिनकी टाइम वेस्ट हुई है, क्योंकि टीबी का ट्रीटमेंट शुरू करके डॉक्टर ने वेट करने की जरूरत बोला उनको, और उसमें ठीक नहीं हुआ, फिर जब तक वो आगे डायग्नोस हुआ ऑलरेडी ज्यादा स्टेज में स्टेज 3 स्टेज 4 होके डायग्नोस हुए थे। अनएक्सप्लेन वेट लॉस, अगर बच्चे का वजन घट रही है बिना कारण के, अगेन टीबी एक कारण हो सकती है वजन घटने की, बट इसके अलावा कैंसर एक बहुत ज्यादा कॉमन रीजन। तो बुखार आ रही है, वजन घट रही है, बिल्कुल नहीं सोचना, द पेशेंट हैज टू बी सेंट to a nearest healthcare facility where diagnosis of cancer can be made and the doctor has to evaluate for malignancies. आंख में मोतिया की तरह, मोतियाबिंद की तरह सफेद कलर आ रही है, जैसे कलर जैसे आप कैटरैक्ट में देखते हो, छोटे बच्चों में अगर आए तो जरूर उसमें देखना होता है। तो छोटे बच्चों में कैंसर होती है रेटिनोब्लास्टोमा, वो अगर आप लेते हैं तो कभी कभी आप फ्लैश लगा के फोटो लेते हो तो आपको दिखता है ना, आंख में कभी कभी लाल कलर आती है या सफेद कलर आती है। तो अगर किसी भी बच्चे में एक कलर, एक में व्हाइट आया दूसरे में नहीं आया, तो जरूर उनका आई चेकअप कराइए, क्योंकि उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, अगर स्क्विंट आ रही है, बच्चे का नजर तिरछी हो रही है बिना कारण के, पहले नहीं था अब होने लगी है, तो उसको भी प्लीज आप इवेलुएट कर लीजिएगा, बिकॉज वो भी ब्रेन ट्यूमर का एक लक्षण हो सकती है। पेट में सूजन आना, बहुत सारे जो किडनी के ट्यूमर्स होते हैं उनमें माँ बाप भी बोलते कि माँ नहाते वक्त मुझे गांठ मिली पेट में, तो ऐसे सिम्टम आए तो लेके आ जाइए। और सर दर्द हो रही है बच्चे का, आजकल टीवी और स्मार्टफोन इतना ज्यादा देखते हैं कि सर दर्द तो होते ही है, पर अगर बच्चा ज्यादा सर दर्द बोल रही है, सुबह उठते ही सर दर्द बोल रही है, सुबह उठते ही उल्टी कर रही है, तो जरूर इवेलुएट करिए, बिकॉज ब्रेन ट्यूमर्स अगर पहले टाइम पे पकड़ लेते हो तो उसमें इलाज आसान हो जाती है। एंड फाइनली, लिम्फ में पेन हो रही है, जोड़ों में सूजन आ रही है, या फिर हड्डी में इतना दर्द हो रही है, सूजन आ रही है, तो वो सारा सूजन इन्फेक्शन नहीं होती है या फ्रैक्चर नहीं होती है, उसमें भी जांच करना जरूरी होती है। अब जांच करके इलाज करने में एक बहुत बड़ी टीम इन्वॉल्व है, जैसे मैडम ने अभी बताया कि देयर इज अ टाइम द चाइल्ड स्टेप्स इनटू द हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है जिसमें पैथोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, पैथोलॉजी में भी साइटोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, हेमेटोपैथोलॉजी, ऑल ऑफ दीज सर्विसेज आर नीडेड फॉर डायग्नोसिंग अ कैंसर पेशेंट। एंड इमेजिंग चाहिए, सीटी स्कैन चाहिए, कभी कभी पेट सीटी स्कैन चाहिए, वो जरूरी होती है स्टेजिंग के लिए। तो ये एक हिस्सा हुआ, डायग्नोसिस हमने पहुंच लिया। डायग्नोसिस आने के बाद ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट के 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती है। एक कीमोथेरेपी होती है जो सब में, ज्यादातर सब में ही होती है। रेडी सर्जरी होती है, कुछ बच्चों में, कुछ कैंसर्स में सर्जरी की जरूरत होती है। रेडियोथेरेपी, अगेन थोड़े बहुत पेशेंट्स में रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। एंड फाइनली बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, कुछ ऐसे कैंसर्स होती है जिसमें ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ती है, खून बदलने की इलाज की जरूरत होती है, उसके बारे में भी हम अभी देखेंगे। और ये हो गया ट्रीटमेंट, बट ये ट्रीटमेंट तभी संभव होंगे पर उसके साथ एक बहुत बड़ी टीम जुड़ी हो। तो उसमें नर्सिंग जरूरत है, फार्मासिस्ट होनी चाहिए जिनको पता है दवाइयों के बारे में, दवाई कैसे लोड होती है उसके बारे में, सोशल वर्कर्स, फाइनेंशियल अरेंजमेंट हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम या इंश्योरेंस पैकेजेस और एक 20-30% पेशेंट्स को ही होती है, उसके बाकी जो फंडिंग अरेंज करना है। तो जैसे सर ने अभी बताया, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, सीएम रिलीफ फंड, पीएम रिलीफ फंड, और स्टेट्स के अलग अलग स्कीम्स होती है, जैसे यूपी स्टेट में असाध्य रोग निधि है, वैसे राजस्थान में दूसरी स्कीम है। तो ऐसे एक एक स्टेट के जो स्कीम, पेशेंट किसके लिए एलिजिबल है वो देखना, और वहां पे इलाज के लिए फंडिंग के लिए एप्लीकेशन डालना, उसको ट्रेस करना, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी टीम रहती है। साइको सोशल केयर, माँ बाप टूट जाते हैं, डायग्नोसिस सुनते ही दे विल गेट एक्सट्रीमली वरीड, तो उनको काउंसल करना, उनको समझाना कि नहीं इलाज करना जरूरी है, इलाज से आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी, वो बताना, उसके पीछे भी एक टीम होती है, उसको समझाना। और बड़े बच्चों को खुद समझ में आते हैं कि नाम सुन के ही उनको पता होता है, वो भी खुद फोन पे ढूंढ सकते हैं कि ये बीमारी क्या है, उसके क्या लक्षण है, तो वो भी डर जाते हैं, तो उनको भी समझाना, उनको भी इलाज के सही इलाज के रास्ते ले आना, उसके लिए भी हमारे पास एक टीम रहनी चाहिए। न्यूट्रिशनिस्ट, इंडिया में डाइट डाइट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है,
जो पेशेंट्स जो मैल नरिश होती है वो ये ट्रीटमेंट टॉलरेट नहीं करेंगे अच्छे से। तो शुरुआत से उनका डाइट के ऊपर फोकस, उनको पौष्टिक खाना मिलना, उनके ट्रीटमेंट के दौरान जब भूख नहीं लगेंगे, अगर आपके फैमिली में कैंसर हुआ है तो यू मस्ट बी नोइंग द डाइट एपिटाइट कम हो जाती है, you feel like vomiting, you don't feel like eating at all. So imagine a child going through the whole thing. So you have to constantly handhold through every single day of the treatment that the child has to eat. When certain days child will not eat at all, there will be ulcers in the mouth, and certain days the child will eat very well. So between all these things, families have to be counseled regarding hygiene. It's very important that infection should not happen during treatment. Again, schooling. And अगर जैसे मैंने अभी बोला, हमारे यहाँ पे एक प्ले एरिया है जहाँ पे एक टीचर रहती है, तो वो टीचर रोज इनके साथ बैठते, तो ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते इस दौरान, तो कुछ महीने स्कूल जा पाएंगे, तो उस टाइम पे उनसे उनको और सिखाने के लिए उनकी क्राफ्ट्स की टीचिंग होती है, डांस होती है, ताकि उनके भी मन एक्टिव रहेंगे और इस बीमारी के बारे में वो नहीं सोचेंगे। तो ये भी बहुत बहुत जरूरी है। और ट्रीटमेंट के बाद उनको वापस रीइंटीग्रेट करना कम्युनिटी में, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये एक बहुत बड़ी टीम रहती है हर सेंटर में जहाँ कैंसर की इलाज होती है, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ट्रीटमेंट फैसिलिटेशन, जो हमें एनएचए की तरफ से, आयुष्मान भारत की तरफ से मिल रही है। तो कीमोथेरेपी होती है, जो भी ट्रीटमेंट कैंसर के लिए जो मेडिसिन होती है वो अलग अलग फेस, और ऑलमोस्ट एवरी कैंसर वुड रिक्वायर कीमोथेरेपी एज पार्ट ऑफ इट्स ट्रीटमेंट। तो उसके अलग अलग टाइमिंग के ऊपर, क्योंकि आप लोग देखते हो पैकेजेस को, इसलिए मैंने सोचा ये कुछ नेम्स डालते हैं। तो पैकेजेस में अगर आप देखेंगे, कुछ पैकेजेस में होंगे इंडक्शन थेरेपी, maintenance therapy, consolidation therapy. So these are different phases of treatment that are required for every patient. So every tumor will have different. So leukemia will have an induction followed by a consolidation, followed by a reinduction or reintensification. So these are defined packages which are available under the PNJ scheme, the version that we are currently following. Every scheme, the patient gets admitted, gets treatment. There will be some oral medicines to continue at home, and then they come back for the जो बार बार लगती है। सो पीडियाट्रिक कैंसर्स में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देयर विल बी द सेम ट्रीटमेंट, द सेम फेसेस ऑफ ट्रीटमेंट विल बी देयर, इट विल नॉट बी द सेम ट्रीटमेंट which is given again and again. And then some of these cancers will require surgery, and some of them will also require radiation. And so with this treatment over the years, आपने सुना अभी कि कैंसर एक बहुत डरावनी डायग्नोसिस जरूर है, बट उसके बाद इलाज से ठीक भी हो जाते हैं। तो इलाज के साथ अभी अगर आप देखेंगे ALL, जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, जो सबसे कॉमन कैंसर्स में एक है, तो उसकी सर्वाइवल अभी मोर देन 90% है जी। ये वेस्टर्न डेटा है जो मैं दिखा रही हूँ, बट इंडियन डेटा में भी हमने देखा है कि 80% सर्वाइवल हमें मिलती है ALL ट्रीटमेंट के क्योर में। तो इसके अलग अलग फेसेस है, और ये सारों की पैकेज आपको अलग से चूज करना होगा ट्रीटमेंट के लिए, और फाइनली मेंटेनेंस होती है, और ALL की ट्रीटमेंट लगभग 2 years की ट्रीटमेंट रहती है। तो ऐसे ही होता है सॉलिड ट्यूमर्स जैसे अभी किडनी में कैंसर है तो उसको विल्म्स ट्यूमर हम बोलते हैं, और विल्म्स ट्यूमर में पहले हम कीमोथेरेपी देके उसको छोटा करते हैं, फिर सर्जरी करते हैं। किसी किसी विल्म्स ट्यूमर में रेडिएशन की जरूरत है, किसी किसी की उसमें आगे कीमोथेरेपी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये अलग अलग कैंसर्स की स्टेजिंग के ऊपर हम डिसाइड करते हैं। सारे कैंसर्स में सर्जरी की जरूरत नहीं है। अगेन पेरेंट्स को एक गलतफहमी होती है कि हम सर्जरी करके ठीक कर दें, वो सर्जरी एक एंड ऑल नहीं होता। सर्जरी ट्रीटमेंट की डूइंग सर्जरी डज नॉट फिनिश द ट्रीटमेंट, देयर इज डेफिनेटली अ ट्रीटमेंट आफ्टर दैट आल्सो, बिफोर दैट आल्सो, व्हिच हैज टू बी फॉलोड एज पर प्रोटोकॉल। एंड फाइनली रेडियोथेरेपी इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे आपकी एक्सरे की रेडिएशन होती है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन अगर एक टिश्यू में जाती है तो दैट विल किल द सेल and prevents DNA repair in that cell. So that is very helpful for local control
of local control of cancers, especially in solid tumors. So it's not required for all the solid tumors, but it's given for high risk ones, the ones where surgery is suboptimal, it's not been able to completely resect the tumor. In those patients, we'd give radiotherapy, and radiotherapy can be external beam radiotherapy, brachytherapy, or also stereotactic surgeries like in brain tumor. So this is what we use. A linear accelerator is what is followed usually. And here again, a big team, a team of radiation oncologists, physicists, dosimetrists, bring radiotherapy to patients. And finally, the last fourth part of treatment, which is bone marrow transplantation. So many tumors can be treated without bone marrow transplantation, but high-risk tumors like high-risk neuroblastoma, high-risk caving sarcoma, etc., or if you have a relapsed tumor, उसमें खून बदलने की जरूरत पड़ती है. तो दो तरीके की ट्रांसप्लांट होती है, एक ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट और दूसरा एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट. इसमें डिफरेंस क्या है? एलोजेनिक मतलब आपके शरीर के खून ठीक से नहीं बन रही है, तो आपको वो खून को बदल के एक हेल्दी डोनर्स के खून से आपको चेंज करने होते हैं. तो खून मज्जे के ट्रांसप्लांट को हम एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं. तो उसमें पेशेंट को पहले कीमोथेरेपी देते हैं और उनकी खून बनना बंद हो जाती है. उसके बाद जो मैच्ड HLA मैच्ड डोनर है, उनसे स्टेम सेल्स लिया जाता है और इस पेशेंट को दिया जाता है. तो इस कैंसर के सेटिंग में हम किस में यूज करते हैं कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, हाई रिस्क माइलॉइड ल्यूकीमिया, रिलैप्स्ड NHL और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, इसमें एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट होती है. बोन ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट का मतलब क्या है? आपके खून में प्रॉब्लम नहीं है, आपके शरीर में कहीं कैंसर पड़ी हुई है जिसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डोज में आपको कीमोथेरेपी देनी है, पर अगर आप वो कीमोथेरेपी देंगे तो आपका खून भी बनना बंद हो जाएगी. तो इसलिए आप पहले से खून के जो कण होती है, जो स्टेम सेल्स होती है, आप उसको पहले निकाल के रखते हो और उस देते हो, उसके बाद वापस वो स्टेम सेल्स देते हो. इस प्रोसेस को ऑटोलॉगस बोलते हैं और ऑटोलॉगस भी हमें सॉलिड ट्यूमर्स में, हॉजकिंस लिम्फोमा में यूज करनी पड़ती है. तो ये ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट की पैकेज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर health social state medical officers who have joined it, that there is a package for autologous BMT which is available under PMJ. Apply for other schemes like Rashtriya Arogya Nidhi, PM Relief Fund, etc. So when we know that we are dealing with a high risk cancer or a relapse cancer, then we apply directly for, because we don't want to delay the transplant further. And then finally, there is a new treatment called CAR T cell therapy और chimeric antigen T cell therapy. आपके शरीर के खुद के सेल्स को आप ऐसे सशक्त बना रहे हो कि वो वापस जाके कैंसर से लड़े. तो बॉडी से खून निकाला जाता है, टी सेल्स निकाला जाता है, टी लिम्फोसाइट्स निकाला जाता है और उसको बाहर लैब में इंजीनियर करते हैं कि वो ट्यूमर से लड़े. बाद वो प्रोग्राम होती है शरीर में आके वो कैंसर से लड़ती है. तो वो ल्यूकीमिया लिम्फोमास में शुरू हुई है और बहुत सारे अगर सॉलिड ट्यूमर्स में भी अभी उसकी रिसर्च चल रही है. और ये इंडिया के वर्ल्ड के सबसे पहले में से एक है जिनको ऐसे ल्यूकीमिया के लिए कार्टी सेल थेरेपी हुई है और एक तरीके की जीन थेरेपी है वो, और उससे बच्ची ठीक हुई है. और ये इंडिया में टाटा मेमोरियल और IIT बॉम्बे मिलके किया है और उसके लिए उससे वो बहुत सारे पेशेंट्स अभी उसकी फायदा ले रही है. और फाइनली ट्रीटमेंट होने के बाद भी, क्योंकि छोटे उम्र में जब ऑर्गन्स डेवलप हो रही है, उनको ट्रीटमेंट मिल रही है और कैंसर हुई है, इसलिए लाइफ लॉन्ग उनको आगे हमें फॉलो अप पे रखना होता है. अब लाइफ लॉन्ग कोई ट्रीटमेंट नहीं देना होता है, पर हमें आगे फॉलो अप पे देखना होता है कि इन बच्चे को कुछ हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो, न्यूरोकॉग्निटिव फंक्शन नहीं है, गोनाडल फंक्शन, ग्रोथ. बट मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि ज्यादातर बच्चे आगे जाके क्योर हो जाती है. 70 to 80% क्योर हमें ज्यादातर कैंसर्स में मिल जाती है, एक्सेप्ट सम हाई रिस्क रिलैप्स कैंसर्स में जिसमें आउटकम कम होती है. और ये बच्चे आगे जाते हैं और उनकी स्कूलिंग होती है, कंप्लीशन ऑफ स्टडीज, दे टेक जॉब्स, दे हैव गुड प्रोसेस. हमें भी जैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमारे बहुत सारे पेशेंट्स अभी आगे जाके प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हो कि आगे शादी किया, जिनके खुद के बच्चे हुए हैं. तो इट इज अ वेरी वेरी फुलफिलिंग जर्नी. सो इट इज
or is a reality for most childhood cancers, but children cannot fight it alone. So इसलिए हमारे बहुत सारे लोगों की हमें सपोर्ट है, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है गवर्नमेंट की सपोर्ट जो इलाज के लिए हेल्प करते हैं। और ये एक स्टडी में हाईलाइट करना चाहूंगी जो लैंसेट में पब्लिश हुई थी 2023 में फ्रॉम ICMR. वी वर पार्ट ऑफ दिस स्टडी with which we assess the cancer services in India and कितने सेंटर्स है जहाँ कैंसर की ट्रीटमेंट है, वहाँ क्या गैप्स है ट्रीटमेंट में, वो सारा हुआ था। WHO ने भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, इट इज कॉल्ड ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर चाइल्डहुड कैंसर. So global initiative for childhood cancer, the aim is that in low and middle income countries, the outcome that the cure rate of cancer should improve more than 60%. Western centers में 80% upwards already है, वो मैंने पहले ही बताया था, पर सारे लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, सो मिडिल इनकम कंट्रीज में इंडिया भी इंक्लूडेड है एंड लो इनकम कंट्रीज और बहुत सारे कंट्रीज है, तो उन सब के लिए WHO ने एक इनिशिएटिव किया है. और वो इनिशिएटिव की तरफ से हम जब सोचेंगे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स मिलती है, हमें ये प्रॉब्लम मिलती है कि पेशेंट हॉस्पिटल लेट पहुंचते हैं क्योंकि ज्यादातर पेशेंट्स को पता नहीं है, ज्यादातर प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर में डॉक्टर्स को पता नहीं कि कैंसर बच्चों में होती भी है, तो इसलिए लैक ऑफ अवेयरनेस जिस वजह से डिलेड प्रेजेंटेशन. तो ऐसे वेबिनार्स सच एज दिस टुडे लाइक educating healthcare workers, educating medical staff can go a long way to increase early diagnosis and presentation to a healthcare facilities. कभी कभी हेल्थ केयर फैसिलिटी में आने के बाद भी पेशेंट का डिले हो जाती है, तो एक्सिस्टिंग सर्विसेज अगर हम स्ट्रेंथन करेंगे, जैसे सर ने अभी पहले बताया कि मेडिकल कॉलेजेस में भी ऐसे ही वेबिनार्स होते रहेंगे, तो दैट विल बी अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ रिमाइंडर टू ऑल द प्राइमरी केयर प्रैक्टिशनर्स, पीडियाट्रिशियंस दैट दीज डायग्नोसिस एक्सिस्ट एंड जल्दी से जल्दी आपको डायग्नोस करके इलाज करानी. और जहाँ पे फैसिलिटी नहीं है डायग्नोसिस के लिए, देयर विल बी सेंटर्स which are capable of diagnosing, send the patient there, get the diagnosis and then call the patient back for treatment at your center. The third biggest problem which we face is abandonment. ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले ही बच्चा पेरेंट बोलेंगे नहीं हमें कीमो नहीं लगाना, हमें सर्जरी नहीं करानी. So these are again fear factors. So if you counsel the patients properly, that can also be resolved. And finally, a lot of financial education also goes into it. Patients have to be taken care of. So fine. So it is a goal which can be achieved by governmental support along with professional groups, patient advocates who can work together. So I just pulled out the universal healthcare, the PMJ packages. This is slightly old package, but you can see there is a defined package for pediatric cancer. And this we have also recently published in 2024 on what are the challenges and solutions for implementing universal healthcare in our country. So just remind कर रही हूँ कि 15th February International Childhood Cancer Day है और whole of September is celebrated as Childhood Cancer Awareness Month. And like sir mentioned, it was National Cancer Awareness Day yesterday. And this kind of webinars will go a long way in educating patients, education public, educating healthcare workers, and educating all the allied health professionals in this field regarding cancers and the need for early diagnosis. I'll stop here. I'll be happy to take questions. For orienting us on this cancer, childhood cancer, which is very important, and I can see the effort you have taken up to take up the issues, I mean, which is coming up and how to go ahead and how you can basically identify the disease and other things, and also for the BMT and everything, what exactly is required. So what diagnosis is required, how you have to do the things. So very simple and very nice. So I would like that anybody from the states or the hospitals who want to ask questions to Nita, you can take up, because we have another 10 minutes with us where we can take up the questions, and you can write the questions in the chat box, or if you want to ask some questions, you can raise hand, which we will be able to answer you. So Nita is there. If you want anything specific or any technical issue which you want to relate with, you please ask the questions, which will be very helpful. So over to you, Nand, and ask them to write the questions in the chat box, or they can raise hand and do the needful. Thank you so much, Nita ma'am. Thank you, Vinita ma'am. So is there any queries from the participant side? They may write in the chat box their queries, or they may raise their hand so that we can unmute from our side. So a question has been written from NCD division, Haryana. What is the survival rate in children of that cancer? हाँ जी,
So survival rate in cancers is to the tune of majority. If you put all cancers together, we get a survival of about 70 to 80%. When I say survival, that means cure rate. We are not talking about 2-year survival or 3-year survival. Adult cancers में आपने ध्यान से आप studies देखेंगे तो उसमें कुछ studies होते हैं जैसे 1-year survival, 18-month survival, क्योंकि pediatric cancers are more amenable to treatment. उनके treatment से वो aggressive cancers भी होते हैं, but treat करेंगे तो ठीक होने का chance भी अच्छा है. तो वो हम सोचेंगे कि 5-year सर्वाइवल को हम क्योर मानते हैं. अगर 5 साल डायग्नोसिस से निकल गया और बच्चा ठीक है, रेमिशन में है, तो आगे बीमारी आने की चांस बहुत है. तो दैट 5-year सर्वाइवल फॉर मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स इज अबाउ 70%. कुछ कैंसर्स जैसे विल्म्स ट्यूमर, हॉजकिन्स लिम्फोमा, स्टैंडर्ड रिस्क ALL, उसमें वी गेट इट अबाउ 90% ऑल्सो. और कुछ में जैसे स्टेज 4 न्यूरोब्लास्टोमा या हाई रिस्क AML, उसमें हमें 30 to 40% या उससे भी कम भी मिलती है. तो ओवरऑल पुट टुगेदर इट विल बी अबाउ 70%, एंड इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डिसीज as well as the stage of disease. Thank you, ma'am. So there is another query that cancer screening available, any kind of cancer screening available in children? Yes, very important question. जैसे adults में हम लोग बहुत बार कैंसर स्क्रीनिंग सुनते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सुनते हैं, कैंसर सर्विक्स के लिए पैप स्मीयर सुनते हैं, और ओरल कैंसर के लिए ओरल स्क्रीनिंग सुनते हैं. ऐसे बिल्कुल भी नहीं है पीडियाट्रिक कैंसर्स में. ऐसे कुछ भी टेस्ट या एग्जामिनेशन नहीं है जिससे हम स्क्रीन कर सकते हैं. स्क्रीनिंग फिर भी एक चीज बोल सकते हैं कि आंख में जो मैंने बताया रेटिनोब्लास्टोमा, वो भी अगर आपको छोटे टाइम पे आप छोटे इन्फेंट को जब हॉस्पिटल ले जाते हो वैक्सीनेशन के लिए, तब जरूर पीडियाट्रिशियन एक बार देख सकते हैं. बट ऐसे कोई डिफाइंड स्क्रीनिंग टेक्निक नहीं है कैंसर्स के, पीडियाट्रिक कैंसर्स के लिए. तो हम यही कर सकते हैं कि डायग्नोसिस सिम्टम्स जैसे ही शुरू हो जाए उसको जल्दी पकड़ में लाए. तो दैट इज अर्ली डायग्नोसिस. वी डोंट हैव स्क्रीनिंग, बट वी कैन डू अर्ली डायग्नोसिस इन पीडियाट्रिक कैंसर्स. थैंक यू. So there is a question from Gangadhar. They is saying that there is no pediatric cancer government hospital in Vijayawada or anywhere in AP in India. Okay. So this we will be taking up, Dr. Gangadhar. Definitely we need to check it up whether we have, because in UP and nearby states we have these specific hospitals for pediatric patients. So I think this is a very important, and we can take up this issue definitely at NHA and to the Ministry of Health. Definitely will take it up. They're saying that NGOs helping in other aspects of children like education, and also there are NGOs, and because I have seen these NGOs working in the different fields. Oh, though these NGOs are there, and you can find these NGOs name in the website, because once I have seen these NGOs name while I was working at Mota. So some NGOs were working on cancer only. So you can find those very well, and these are on the websites. You can find in Mota's website or Ministry of Health's website, where you can find the names of NGOs who are helping in for children like education and other. There are some of the good NGOs are there where we have some good doctors also. They're also trying to get the diagnosis done. So this is also being done in the health camps. Many of the places like we were holding health camps in Jharkhand also through Mota and other ministries, or even in the state hospitals, they do it. And when we have this the CSCs, we have small health camps. There also the diagnosis is done in some manner. Not every time, but there are health camps which are organized purposely for this purpose. So you can have all those things. Any other question? Any other questions from the participant side? They may write in the chat box, or they may raise their hand so that we can unmute them. कुछ क्वेश्चंस है पार्टिसिपेंट्स से तरफ से, अपना क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो रेज हैंड्स कर सकते हैं, हम यहाँ से अनम्यूट कर सकते हैं आप लोगों को. Hope everybody has understood, and you can take. We will share you anything. If I think Nita, can we share the presentation with the audience, those Yes. to the states, and Definitely. can we share your presentation? Yes, ma'am, definitely.
Okay, so I'll try to share the presentation with our HSJs so they can percolate it down. It will be very helpful to learn about it. Those who couldn't join with us, they will be able to. And any questions are there, so we can also give you the mail IDs. And for Nita, you can write it her on mail, and you can, if you want to know about the diagnosis services or the implementation, how it has to be done, or the BMT process and anything which is there, we can take up these issues. And this will be very helpful. The goal of NHA is to take care of patients. I mean, PMJY, whatever packages we have prepared for the cancer patients and for the childhood cancer as well, we will be able to percolate it in a much better way. So thank you, Nita, for joining us. And good, you are there in Hematocon, I know that. So good to know that things are going well. And at NHS, it was a pleasure that everybody has joined. It was a good participants who joined us, and this was from states. Actually, some hospitals also joined individually. So thank you so much. Thank you, everybody. And there is a CB team which is sitting with me, Himagni, Nandanan, Vidhi, everybody is here is from media team. And especially thanks to Dr. Pankaj Arora, who has been very kind to join us on this occasion. And we are regularly having these Nirantar Shiksha, and on 12th we have Pneumonia Day now. So we are going to talk about, because nowadays the AQI in India is very high, I mean, especially in Delhi. So we are going to take up these talks, I mean, regularly, and this will be very helpful for the participants to learn and go ahead. Thank you so much, everybody, and best wishes. Thank you. Thank you so much. Simultaneously, a feedback link has been shared in the chat box. So you can rate us how was the webinar, and if you want any improvement in the webinar or any queries related to the topic, you can write in the feedback form. A link has been shared in the chat box. Please go through the link. Thank you. Thank you to Dr. Arora, and thank you to the capacity building team, Vinita ma'am, to everybody in the team. Thank you. Thank you, Thank Dr. you. Saab. Thank you, Dr. Shastha. Thank you very much. Okay, man, we can first.